from home to school you go with 10 km per hour, and from school to home you come with 5 km per hour, then what will be your average speed? 10 किलोमीटर से आप जा रहे हैं, 5 किलोमीटर से वापस आ रहे हैं, so what will be your average speed since the distance remains same? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करते हैं, whenever a certain distance which is fixed, suppose this distance is what? Distance is same, suppose this distance is x, okay, from O to P my distance is x, and जाते समय उसका जो वेलोसिटी है वो है मान लीजिए v1 किलोमीटर पर आवर, v1 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय सेम डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, डिस्टेंस रिमेन सेम, the distance remains same x, and while returning his velocity is v2 kilometer per hour, okay. Then what is your average speed? So my average speed formula in this case I am giving the shortcut method, 2 v1 v2 divided by v1 plus v2, 2 v1 v2 divided by v1 plus v2. This is the formula to calculate average speed. तो average speed निकालने के लिए not simply divide v1 plus v2 by 2, but you use this formula 2v1 v2 divided by v1 plus v2. You can solve this question by speed equal to distance upon time also. मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको ऐसे क्वेश्चन करेंगे दोनों तरीके से, both the way, so that you are clear with this concept. Now I am replacing this value. Suppose you go from O to P 10 km per hour, and while returning you return with a speed of 20 km per hour. Since the distance remains same, so what will be your average speed? तो average speed क्या होगा इस केस में? 2 जा की स्पीड से रहे हैं 10 की स्पीड से, आ की स्पीड से रहे हैं 20 की स्पीड से, डिवाइड बाय 10 plus 20. I am just replacing this value. First velocity multiplied by second velocity divided by first velocity plus second velocity. In numerator 2 multiplication of quantity divided by addition of quantity without multiplication any term. So this is what 2 10 20 into 20 400 divided by 30. So you will get how much? 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13.33 what kilometer per hour. So this is your average speed. So my average speed is nothing but 13.33 kilometer per hour. Now most of the student think that कि सर ऐसे ही क्यों करें, क्या इसके लिए दूसरा मेथड है? तो यस, कन्वेंशनल मेथड है, but it become very lengthy. That is why I am giving you the shortcut method. But this value 13.33 km per hour you will get from the second method also. So this method is called shortcut method. This one is shortcut method. ये shortcut method है, इसे हम पहला first method बोल सकते हैं, first method. आते हैं conventional method पे, second method. Now I am going to solve this question by conventional method. So what is the formula of average speed? Average speed is nothing but total distance covered divided by total time taken. Total distance covered divided by total time taken. Okay, what is my total distance? So total distance is what? X जाने में plus X आने में, X from O to P and then another X from P to O. Okay, total time. So what is my total time moving from O to P? What is my time T1 moving from O to P? So देखो, speed is equal to distance upon time. So what is my time formula? Distance upon speed. What is my distance during O to P? So मैं O to P के लिए निकाल रहा हूँ value. So what is my T1? So D is distance is X. What is speed? Speed is 10 km per hour. So what is my total time taken? T1 plus T2. यानी जाने में लगा T1, आने मान लेते हैं लग रहा है T2 टाइम. जाने O to P के लिए T1 and from P to O time taken is T2. Now
what is my t1 value? This x plus x 2x. What is my t1 value? T1 value is x by 10. What is my t2 value? T2 value is what? When you calculate t2, you will get distance upon speed, x by 20. So I can write here x by 20. Now this is your average speed formula. Now total distance, total time taken, total distance is the x plus y, total time निकाल लिया t1 t2. Now 2x divided by, देखिए 10 और 20 का LCM क्या होगा? 20. 1 2 the 20, 2x plus 21 the 20x. So you will get 2x divided by 2x plus x gives 3x by 20. So 20 ऊपर चला जाएगा, ये x gone. So this is what? 20 multiplied by 2, 40 by 3. 40 by 3, again the same concept. Now 40 by 3 is what? 13.33 kilometer per hour. So this is my average speed, which is similar to this speed by conventional method. So by conventional method, this process is not, I am saying that it is difficult one, but this is the simpler concept. This is shortcut method. Okay, you simply remember 2ab divided by a plus b, 2v1 v2 divided by v1 plus v2, 2xy divided by x plus y. So this is the simple formula. You will get the same result rather than you are calculating t1, t2 and this formula and then putting all this value, take LCM and then you will get the same result. So since this is the easier one, that's why I am giving you this concept. Average speed is equal to 2v1 by v2 divided by v1 by v2, provided this x remains same, this distance remains same. तो अगर आप same distance को x वेलोसिटी से जाते हैं और y वेलोसिटी से वापस आते हैं, तो आपका जो एवरेज स्पीड होगा उसका फार्मूला होता है 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. अगर a स्पीड से जा रहे हैं, b स्पीड से वापस आ रहे हैं, then your formula is what? 2ab divided by a plus b. If you go u velocity से जा रहे हैं, v velocity से आ रहे हैं, then your formula is 2uv divided by u plus v. So this is how you solve a problem of calculation of average speed whenever distance remains same but the velocity of from one point to another and from backward journey, onward journey and backward journey, velocity are different but the distance remains same. Then at that case you apply this basic formula, the shortcut method, 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Now I move to the next question. Now next question is, how many minutes does Aditya takes to cover a distance of 400 meter if he runs at a speed of 20 kilometer per hour? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे आते हैं. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कौन कौन से डेटा आपको गिवन है पहले वो देखते हैं. तो देखिए आदित्य जो है वो 400 मीटर की दूरी जो है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है 400 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है. उसका स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर. यानी आपको क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है. डिस्टेंस इज हाउ मच? 400 मीटर. स्पीड दे रखा है कितना? 20 किलोमीटर पर आवर. एंड यू नीड टू कैलकुलेट टाइम. टाइम इन मिनट्स. आपको टाइम किसमें निकालना है? मिनट निकालना है. पहले एक चीज समझो, देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और यहां जो स्पीड इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर. सो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर पर सेकंड. दिस इज मीटर, देन यू फाइंड योर टाइम वैल्यू इन सेकंड. तो जो टाइम की वैल्यू आएगी, द वैल्यू व्हिच यू गेट इज मस्ट बी इन सेकंड. So first step is the conversion. Why I am converting this value into meter per second? Because distance is given in meter. That's why I am converting this value into meter per second. So how you convert this value into meter per second? So you simply multiply 5 by 80, conversion factor. So you must multiply 20 into 5 by 80. So 20 multiplied by 5 by 80. So 2 nines are 2 times are. That means 50 by 9. So this value is how much? 50 by 9 meter per second. आगे मीटर पर सेकंड में. Now distance given है, speed given है. तो what is the formula of speed? Speed is equal to distance upon time. So what is the formula of time?
So time formula is what? Distance upon speed, where d is distance, s is speed. Okay, now d distance कितना है? Distance is 400 meter. So distance is given 400 meter. Speed is 50 by 9. Sorry. So 50 by 9 I am writing 0 0 gone. So 40 into 9 360 divided by 5. So 5 7 ja 30. 5 7 ja 35 plus 1. 5 2 ja 10. So your time value is in second. So this time in second, but question asks you to find the time in minutes. So you need to convert this second into minute. So देखिए 72 सेकंड है, तो इसका मतलब ये हो गया 16 मिनट प्लस 12 सेकंड, यस और नो। तो ये जो 60 सेकंड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस 60 सेकंड इज कॉल्ड 1 मिनट। एंड हाउ यू कन्वर्ट 12 सेकंड इनटू मिनट? So 12 second divided by in 1 minute 60 second. So I am converting this 1 by 5. 12 1 ja 12, 12 5 ja. So this is what? 1 and 1/5 minute. This is my answer. So my time value in this case is what? 1 minute 12 second and 12 second again converted into minute. So this is the conversion. Most of the cases in टाइम एंड डिस्टेंस आपको टाइम, डिस्टेंस, किलोमीटर, मीटर, सेकंड, आवर, इन सब में कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा यूनिट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, स्पीड दे रखा है किलोमीटर में, तो आपको पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर कह रहा है टाइम निकालना है आपको मिनट में, और आपको ये बताना चाहिए कि once you solve the meter and kilometer meter per second value you will get time in second। देखिए कैसे, यहाँ देखिए डिस्टेंस किसमें दे रखा है? मीटर में। देखिए निकालते कैसे हैं? डिस्टेंस इन मीटर, यूनिट बैलेंस, and this 50 by 9 is what? Meter per second. So I am writing unit here. So this as second goes up. So this gone. You will get value in how much? In second. This s represent second. तो ये जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी? सेकंड में आएगी, मिनट में नहीं आएगी डायरेक्ट। तो दिस इज यूनिट बैलेंसिंग है। यूनिट कैसे आती है ये सब आप लोग पढ़ रखा होगा अपने स्कूल लेवल पे, ठीक है? तो